इंडिया टुडे के सालाना कॉन्क्लेव के पहले दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योगपतियों, पत्रकारों और फिल्मकारों से मुखातिब हुए। अपने भाषण में शौकत अजीज ने कहा कि पिछले एक साल में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। दोनों कश्मीर के बीच बस सेवा भी शांति की प्रक्रिया को जारी रखने में अहम भूमिका निभाएगा। अब जरूरत है कश्मीर समस्या को सुलझाने की और इसके लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। We have to move all this in tandem with making progress on the Kashmir issue. This is a complicated issue. And we believe that progress on this issue will influence progress on other parts of our relationship. I think we need to approach it with courage, leadership, magnanimity, sincerity and flexibility. शौकत अजीज ने माना कि यह काम मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। The path of peace, ladies and gentlemen, is never easy. It is often fraught with greater uncertainty and risk than the path of war. Over the past few months, ever since Pakistan and India began the composite dialogue process, Pakistan has demonstrated time and again that it is ready to take chances for peace. बाद में सवाल जवाब के दौर भी हुए। उद्योगपति राहुल बजाज का सवाल था कि भारत और पाकिस्तान के उद्योगपतियों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। As regards trade, we have just had an experts committee meeting in Delhi, which has identified or attempted to identify why the trade level is where it ought not to be, and the barriers which exist. The concern our businessmen have is non-tariff barriers. I think these are solvable, and with support of the Indian private sector and the government, we can attempt to create a level playing field. कार्यक्रम के अंत में इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने उनसे जानना चाहा कि उनके और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच काम का बंटवारा कैसे होता है। So in India we have Prime Minister Manmohan Singh and Mrs. Sonia Gandhi, considered to be a kind of odd couple in power. We don't know too much about the dynamics of that relationship. Perhaps you could give us an insight, the relationship between you and President Musharraf. How does it work out? Who does what? And where is each one's role defined? He has a lot of wisdom and global stature. He advises and provides leadership to the country. The role of the Prime Minister is very clear in our Constitution. The Prime Minister is the Chief Executive, but I as Prime Minister feel privileged that we have a President like General Musharraf. We have a very close relationship, personally, and I and the President talk about all issues which concern Pakistan and its future. शौकत अजीज ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का दौर जारी रहेगा और पूरे क्षेत्र में इससे शांति बनी रहेगी। मृत्युंजय कुमार झा, दिल्ली आज तक।